Vaishnavji, Honorable Minister for Science and Technology, Higher and Technical Education, Government of Gujarat, Shri Jeetubhai Waghani, dignitaries and distinguished guests from industry, business, government and media. Circumstances like unprecedented COVID-19 pandemic, global chip shortage, and so on, the government launched the Semiconductor mission to establish self-reliance and give boost to India's fast-expanding electronics manufacturing and innovation system. The recently announced semiconductor policy also enables the mission with the aim of providing support to the industries to manufacture semiconductors and displays in Gujarat and build potential for new employment on a large scale. I would like to call today as a landmark day for all of us. Today we have gathered here for creating a new milestone that will lead to a big leap in value creation and at the same time position Gujarat at the frontier as Semicon hub. With these words, I take the opportunity to welcome and greet our dignitaries on the dais. May I invite Secretary, Department of Science and Technology, Government of Gujarat, Shri Vijay Nehraji, to welcome the Honorable Chief Minister, Shri Bhupendra Bhai Patel. Let's give a big round of applause. Thank you, sir. I now request Mission Director, Gujarat State Electronics Mission, Mr. Vijay Khare, to welcome the Honorable Union Minister, Shri Vaishnavji. Thank you. I humbly call upon the Managing Director of GIL, Ms. Gargi Jain, to welcome Honorable Minister of State, Shri Jeetubhai Waghani. Thank you very much. I once again invite Shri Vijay Nehraji to present a bouquet and welcome Shri Anil Agarwalji, Chairman, Vedanta Group, and welcome him. Thank you very much, sir. Mr. Vijay Khare will now welcome Mr. Brian Ho, Vice President, Foxconn Group. Thank you very much. Once again, I am pleased to invite Ms. Gargi Jain to welcome Mr. Akash Heber, the promoter of Vedanta Group. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I take the opportunity to request Shri Vijay Nehraji to welcome Shri Pankaj Kumar, Honorable Chief Secretary, Government of Gujarat. Thank you very much. Last but not the least, may I once again have Mr. Vijay Khare to present a bouquet and welcome Shri Pankaj Joshi, Additional Chief Secretary to Honorable Chief Minister. Thank you, everyone. An occasion, a morning like this is meant to be special. Following our traditions, greetings from our dignitaries from Vedanta Foxconn Group now follows. May I invite the Chairman of Vedanta Group, Shri Anil Agarwalji, to welcome the Honorable Chief Minister, Sir, Shri Bhupendra Bhai Patel. Thank you, sir. I am delighted to invite Mr. Brian Ho, Foxconn Group, to welcome with a bouquet the
I am elated to invite once again Shri Vijay Nehra ji for the welcome remarks. So please. Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Patel ji, Honorable Union Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister for Science and Technology and Education, Government of Gujarat Shri Jitubai Waghani ji, respected Chief Secretary sir, our most important guests for the day, Chairman of the Vedanta Group Shri Anil Agarwal ji, Mr. Brian Ho, Senior Vice President from the Foxconn Group, Shri Akarsh Hebarji, Managing Director of the Vedanta Semiconductor Group, respected Shri Pankaj Joshi sir, Additional Chief Secretary to Chief Minister, all of the delegates present from the Vedanta Group and the Foxconn Group, all other dignitaries present, and all members of the print and electronic media. On behalf of the Government of Gujarat, I extend a very warm welcome to all of you on today's important historic occasion. Honorable Chief Minister sir, this day today is important for us because you have completed 1 year in office today. It is a beautiful coincidence that this important day is turning out to be a memorable and indeed a historic day, not only for the state of Gujarat, but for our entire nation. It's under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, sir, to realize the vision of Atmanirbhar Bharat, that one of the most ambitious and visionary schemes in the form of the India Semiconductor Mission, with an outlay of 76,000 crore financial incentives, have been announced by the Government of India to start the semiconductor chip manufacturing and display manufacturing in our country. On this day, on behalf of the Government of Gujarat, we are immensely thankful to the Government of India and the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji that this thing is finally materializing, and it is even a happier occasion that it is happening in the state of Gujarat. I take this opportunity, sir, to thank you on behalf of the Department of Science and Technology for having guided us towards putting in place the first and only dedicated semiconductor policy of any government in India. What we are seeing today, what we are witnessing today, is the culmination of efforts of last 8 to 10 months. It started with your direction, sir, to have a dedicated policy. Because Gujarat is considered as a policy-driven state. Putting a policy in place means that there is a predictability in the regime that we put in place. Similarly, sir, I remember in the month of January, you had guided us that not only the policy, but we should also put in place a dedicated mission to implement this program. And for that, under your guidance, the Gujarat State Electronics Mission was conceived, approved, staffed, and operationalized. I thank you so much, sir, for that. Today we have with us Honorable Union Minister for Railways, Telecommunications, Electronics and IT, Shri Ashwini Vaishnav ji. Sir, on behalf of the Government of Gujarat, we thank you for guiding us in creating an ecosystem to develop a joint effort between the Union Government and the State Government, so that this project, which is one of the most important in our corporate and economic history, is taken to its successful launch. We thank you and we welcome you for our program today. Your presence has lent this function today heft and stature. I also take this opportunity to welcome our dynamic minister, Shri Jitubai Waghani ji. Sir, it is only because of your constant leadership and encouragement that the Department of Science and Technology has been able to roll out 5 policies in less than 1 year, starting from the IT policy
and the biotechnology policy and the right-of-way policy, but this policy, the semiconductor policy, which we have been able to announce because of your constant guidance and encouragement, is the one that will help us transform the entire industrial ecosystem in our state and thereby help make an Atmanirbhar Gujarat towards achieving the aim of an Atmanirbhar India. We extend a very warm welcome to you, sir, for today's function. The most important guests for us today are the representatives from the Vedanta and Foxconn group. I take this opportunity to extend a very warm welcome on behalf of the entire government of Gujarat to Shri Anil Agarwal. Sir, we know you are one of the most dynamic leaders in India today in the corporate sector. Your presence today in this function will guide us and help us ensure a better coordination with all the teams that are working together so that we can move with a synergy and a sense of purpose and unity towards achieving what is perhaps one of the most important and at the same time the challenging assignments. We look forward to your constant guidance. We also welcome Mr. Akash Hebbar. We have had the opportunity to interact with your team yesterday and we really feel highly enthusiastic about your leadership to the entire project, and we are fully confident that the two big groups globally coming together and putting this investment in the state of Gujarat, that is the best way to ensure success of the project. We extend a warm welcome to you. Mr. Brian Ho and his entire team from Foxconn, we extend a very warm welcome to you to Gujarat. We are going to ensure that your entire experience in implementing this project will be exceptionally good, and we commit that we will give the fullest support to you. Today, I extend a very warm welcome to the entire team from Foxconn and Vedanta in this program. We thank Honorable Chief Secretary, sir, for your guidance in fine-tuning the entire administrative aspect of this arrangement, the policy planning. We welcome you, sir, to our function today. We also extend a very warm welcome to Pankaj Joshi, sir, in the Chief Minister's office. Joshi, sir, has been guiding us in formulating this entire policy and putting all the pieces of this puzzle together. We also extend a warm welcome to all the dignitaries present here, especially to Shri J.P. Gupta, sir, from the Finance Department, sir. It's been the generosity of the Finance Department that has helped us put this policy together. Once again, I extend a very warm welcome to all of the dignitaries present here and all members of the meeting. Thank you so much. Thank you, sir. Indeed, an array of achievements have made this day really a historic one. Taking this significant agenda forward, I am thrilled to invite the Honorable Chief Secretary, Government of Gujarat, Shri Pankaj Kumarji, for his remarks on this pioneering initiative. Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupen Patel ji, Honorable Union Minister for Railways, IT, Electronics and Communication, Mr. Ashwini Vaishnav ji, our DST Minister, Shriman Jitubhai Waghani ji, the Chairman Vedanta, Shriman Anil Agarwal ji, Mr. Akash Hebbar, Mr. Brian Ho, Mr. Pankaj Joshi, Vijay Nehra, and all the distinguished participants. In the life of a nation, in the life of a state, there are certain turning points. And these turning points, they leave memorable footprint for the future. These points, they change the future course of the life of the nation and the state. And today, this is that historic day. And I congratulate Vedanta Group for entering into this partnership with Government of Gujarat, which is a win-win situation for all of us. Semiconductor is an industry which can be viewed from two different angles. One is from purely economic point of view, the way the technology is changing in multiple industries, automobiles, computing, digital manufacturing, electronics, and the way we live our life, the way the technology is changing, semiconductor industry is going to be the future of the nation.
So it has a huge economic implication. It will lead to lot of development of upstream and downstream industries, not only in the state of Gujarat, but in the whole country. So this is a national project which is going to happen. This will generate lot of skilled employment in all these industries. Ancillary industries, they will come in large numbers that will provide huge employment and that will change the economic and social fabric, the structure of the state. On the other hand, this is a very strategic industry. The design, manufacturing of semiconductors has a lot of strategic implication. It has a lot of geopolitical importance also. So from totality, this is a friendship, this is a engagement between Vedanta and the government of Gujarat that has been achieved today, going to be achieved today, will have a long-standing implication. And from the government side, I assure Vedanta Group to have, you will be having the experience of execution and running of an industry which will be very, very unique, and we will provide full support for the success of this project. Thank you again, and I welcome Vedanta Group in the state of Gujarat. Thank you, sir. And as rightly mentioned, Gujarat has been recognized internationally and nationally as a leading industrial state in India for offering a favorable business ecosystem that is supported by state-of-the-art infrastructure and investor-friendly policies. In addition to this, Gujarat is committed towards the promotion of faster and comprehensive growth in electronics sector. I take the opportunity to humbly invite the leader who is spearheading and providing the strategic direction to this outlook, Shri Jitubhai Waghani, Honorable Minister for Science and Technology, Government of Gujarat, for his remarks. Welcome, sir. નમસ્કાર. વિશ્વાસથી વિકાસ યાત્રા જેમના નેતૃત્વમાં ચાલી રહી છે, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન અને નેતૃત્વમાં સમગ્ર દેશ અને અમને પણ એનું માર્ગદર્શન સાંભળી રહ્યું છે એવો આજનો અમારો ઉત્તમ દિવસ. પાર્ટીને સતત જનતાના આશીર્વાદ મળ્યા. આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વને 1 વર્ષ આજે પૂરું થયું છે ત્યારે હું સૌપ્રથમ તો આપણા મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈને અભિનંદન આપું છું. આ કોઈ એક વર્ષની નહીં, વર્ષોની વિકાસ યાત્રા છે. એ સાથે આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. અનિલ અગ્રવાલજી, આકર્ષ વેબર, બ્રાયન હો, CS પંકજ જોશી અને મારે નામ ભૂલવું જોઈએ કે સતત ગુજરાતમાં આવીને અમારો ઉત્સાહ પણ વધારે છે, પ્રેરણા પણ આપે છે અને આ કામમાં પણ જેમનું માર્ગદર્શન સાંપડ્યું જેવા અશ્વિની વૈષ્ણવજી, વિજય નેહરા, અગ્ર સચિવ નાણા ગુપ્તાજી, આપ સૌ ઉપસ્થિત ભાઈઓ બહેનો અને ખાસ કરીને વેદાંતા અને ફોક્સકોન ગ્રુપ જોઈન્ટ વેન્ચર તરીકે આજે ખૂબ મોટો ઇતિહાસ सेमीकंडक्टर चीज के उत्पादन क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ऐतिहासिक दिन हमारे लिए न मात्र गुजरात के लिए, मैं मानता हूँ पूरे भारत के लिए प्रथम ऐसी घटना है कि कोई सेमीकंडक्टर चीज के लिए गुजरात में बहुत बड़ा निवेश करने. आज मेरे खुशी की बात है, प्रसन्नता है. हम सबके चेहरे पर पंकज जोशी CS आदरणीय मुख्यमंत्री के चेहरा पर रहा था तो अंदर से हम बहुत खुश हैं. ऐसे अंदर से अगर हम कहा है कि बहुत बड़ा काम गुजरात के लिए भविष्य में तो नहीं बोल सकता है कि भूतकाल में कभी नहीं हुआ ऐसा. हमारे भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में आपके साथ गुजरात गवर्नमेंट काम करने जा रही है. हमें बहुत खुशी है. मुझे बताने में भी बहुत खुशी हो रही है कि आदरणीय भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में ये नरेंद्र भाई जिस तरह से गुजरात को बना के गए, जिस तरह से उसने मार्गदर्शन किया, मोदी G20 में हमारे वैष्णव जी सभी जगह जाते, ड्रीम कम ट्रू, ये
भूमिगत फलाधर पे आज आप और हम देख रहे हैं। मैं सब पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा ही नहीं होता है। आदरणीय नरेंद्र भाई ने सेमीकंडक्टर की पॉलिसी भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में, मेरा जो पोर्टफोलियो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो अश्विनी जी का पोर्टफोलियो है, सेपरेट पॉलिसी बनाने के लिए भी उसकी अनुमति वो अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होता है, वहां भी पॉलिसी बन सकती है। लेकिन ये पॉलिसी बनाने के बाद वन टू वन कैसे निवेश गुजरात में आए, इसके लिए भी आपके मार्गदर्शन में, क्योंकि सब दुनिया जिसके पीछे है, ये काम पूरे भारत में गुजरात में होने जा रहा है। सर अगेन मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, अग्रवाल जी आपका भी धन्यवाद करता हूँ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे लिए कोई सामान्य बात नहीं है, सामान्य घटना नहीं है, सामान्य इतिहास नहीं है। और सामान्य बात और सामान्य इतिहास और आज का दिन और सामान्य दिन नहीं है, और सामान्य दिन है, पूरे इतिहास में लिखा जाएगा। हमें खुशी है ताइवान जैसी ताइवान से हुई कंपनी हमारे वेदांता को ज्वाइंट वेंचर करके ये हमारे गुजरात में नरेंद्र भाई जो पॉलिसी बनाई है, ने बताया समय के साथ चलना। दुनिया में गुजरात स्पर्धा करे से कई बार नरेंद्र भाई मोदी ने बोला है, दुनिया के साथ गुजरात की स्पर्धा, कई सारे इनिशिएटिव गुजरात में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, भूपेंद्र भाई के 1 वर्ष के कम नेतृत्व में गुजरात में लिया है। साहब आपकी बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत अच्छे काम किए हैं। और आज से मैं मानता हूँ कि न मात्र गुजरात की भारत के लिए, गुजरात विश्व के लिए बॉक्सिंग में आएगा, सेंटर में आएगा, और पर्टिकुलरली हमारा सौराष्ट्र वो पर्टिकुलरली इस काम के लिए बहुत बड़ा उसका फायदा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बहुत बड़ा फायदा न मात्र गुजरात को, भारत को, विश्व को मिलने जा रहा है। तब मैं आशा करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने और भूपेंद्र भाई ने एजुकेशन पोर्टफोलियो दिया। आपने जो स्किल वर्क फोर्स चाहिए वो भी करना पड़ेगा। भूपेंद्र भाई के मार्गदर्शन में स्किल वर्क फोर्स के लिए भी आपकी पूरी मदद करेंगे। जहां भी गुजरात गवर्नमेंट की जरूरत है, उनकी जिम्मेदारी के रूप में आज भूपेंद्र भाई के मार्गदर्शन में आपको कभी कोई कमी होगी। धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you so much, sir, for the motivation and the robust foundation of our dreams that it will establish. Moving further to our leading mission, I am honored to invite the industrialist and chairman of Vedanta Group, Shri Anil Agarwal ji, for his remarks to the August gathering present here. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome him. Railway Shri Ashwin ji, State Minister of Science and Technology Shri Jitu bhai, बहुत अच्छी बात उन्होंने अभी कही। Officer of this Gujarat government, especially our Pankaj ji, Chief Secretary, our Vijay Mehra ji, Foxconn के प्रतिनिधि Brian, and he is online, the chairman of Mr. Lu of Foxconn. आज जब सुबह मैं अहमदाबाद उतरा, कल 2 दिन लंदन में इतनी हलचल रही। मेरे पास सिलिकॉन वैली से आज लंदन में कम से कम भी 2 लाख गुजराती लोग और हिंदुस्तानी लोग रहते हैं। हमारे पूरे अमेरिका में इतनी हलचल है इस बात को लेकर कि ये काम गुजरात में, हिंदुस्तान में होने वाला है। मैंने एक्साइटमेंट ऐसा
अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा। आप लोगों को सबको मालूम है ये क्या होने वाला है। ये जो काम हो रहा है, ये मध्यवर्गीय परिवार, सबसे बड़ी बात है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 1 लाख लोगों को इमीडिएटली आने वाला है। दूसरी बात है, आप देखिए आज हम लोग पिसते जा रहे हैं क्योंकि इतनी महंगा आईफोन मिलता है, इतना महंगा हम लोग को लैपटॉप मिलता है, हमारे टीवी के दाम इतने ज्यादा है, हमारी जो कारें हैं उनकी दाम इतनी ज्यादा है, सारे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हमारे जो मध्य वर्गीय परिवार हैं वो पिस रहे हैं। अगर बेसिक चीज सेमीकंडक्टर और ग्लास ही है, अगर ये उत्पादन जो आज 10 साल से, और 10 साल से नहीं कह सकते और भी पिछले साल से आप कहें तो पूरी दुनिया में इसकी होड़ लगी हुई है। आज ताइवान के पीछे अमेरिका लगा हुआ है, आज ताइवान के पीछे चाइना लगा हुआ है। वहां कोई तेल नहीं है, वहां और कुछ नहीं है, वहां पे सेमीकंडक्टर बनता है और ये ग्लास फैब बनता है। उसको मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया। आज ताइवान और इंडिया एक ही दौर से गुजर रहे हैं कि दो फाइट करते हैं चाइना से, और वो दोनों, हम लोग दोनों एक हैं। हम आज 4 साल से, मैं मोदी जी के साथ गया था 5 साल पहले जापान, और वहां पे जापानी से कंपनी थी, because we are already manufacturer of optical fiber, which is a glass manufacturer last 20 years. We are the only manufacturer of glass. It is a glass technology, which is very, very important, which requires a clean room, fundamentally. So we were in the business and we acquired this company, which has the largest factory in Taiwan and Korea, where we make display glass. This is the only 3 factory in the world which manufacture this. So we were one of the licensee. Government are very clever, very thoughtful, and when they think, they don't think only Gujarat, they think as a India together. And for them, the most important thing is how can a common man can be benefited. And the common man is the most important, the job creation, and how the startup, how the small scale manufacturer, how the medium-sized manufacturer and the large scale, all can flourish. And this was the one area where the baton was handed over to 2 people. Was our Ashwini Vaishnavi ji. I'm presuming, I have no idea, but I'm presuming that it was handed over back to Ashwini ji by the government. It's a very difficult job because the whole world is after that, including America. How you can make it success, how you can bring it. And Bhupendra Bhai Patel, who gone and worked in the entire department, that how we can do. We were in very difficult situation because where to see the location, because each location was great. Maharashtra, Andhra, Karnataka, all offered the best because this will change. And I could convince everybody that this is just sowing the seed. ये बरगद का पेड़ बन जाएगा, ये बने ट्री बनने वाला है। हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोगों ने इंडिपेंडेंट टीम लगाई, जिसमें फॉक्सकॉन, KPMG, technology people have gone around, look at the whole thing, and they have, this should be very, very clear that it was a very independent decision where we should go. Not the Gujarat government influenced us, nor any other government has influenced us. And I assure each government, whether it's a Maharashtra, whether it's a Karnataka, it is going to flourish because
because he had to create a cluster. I got a call from America where they have created a Silicon Valley dominated by India. And we were dreaming for this for last 10 years, that something like this has to happen in India. Why it is not happening? And this is what this government has done it. And I congratulate government of India. हम तो बहुत छोटे से लोग हैं. जो राजा जो गवर्नमेंट करती है हम लोग साथ में चलते हैं. And I'm very fortunate that they have selected us, that we will deliver. And I can tell you, this is everybody in the state, poor to poorest, who cannot afford to have a TV in their house or electronic appliance, including the toaster. This is a time where 96% of electronic being imported in India. Very unfortunate. This will be Silicon Valley. This will be allow many people to come. Many people to come. What we are looking at, that we need a university around. So we can have our research done. We can draw the best of talent from that. If you go to Taiwan, all factories are around the universities. So it is very important that we don't have to spend time on the infrastructure, and we start as quickly as possible. We are looking within 2 years the production of semiconductor and the display glass. Both should come, and I need, without any, please give us a benefit of doubt. Please give us the support. We are very nervous. I can tell you we are very nervous when I see this kind of pressure from Silicon Valley to America to the Indian community, the excitement all over the world. India is the flavor of the world. And this kind of announcement, where this will be the probably third country, China, Taiwan, maybe Japan, and this will be the fourth country which will be having this kind of, it is not going to be easy. It is not going to be easy. We all have to work together. We all have to sit one side of the table to make sure this success happens and create a cluster. I'm going to talk to Maharashtra government, which is very keen, and we will have many more to come. So many more to come, and I wish everybody one of the best. I landed this morning. I was not sure. I couldn't sleep in the flight because so much of pressure was happening. Normally I sleep in the plane like a baby, but after a long time I couldn't sleep. I was dreaming that I'm going there. I'm going to meet Bhupen Patel, which is I hear that baton was handed over to him, and he's taking that baton. He's taking it forward. So we are going to full support them, and I wish all of you very best. Let's all of us be together, not do speculation, to make sure that we put this threat into the needle. So thank you very much for inviting with me and my team. My whole team has worked, the government has worked. I wish many success. I've come here last time. When I came here, I visited to Dakorji, and I felt something was communicating by the temple that you have to do something in Gujarat, and I could see that has coming true. So all the best. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your kind words. Your leadership will definitely go a long way in boosting the industrial ecosystem of Gujarat. Well, with this, we have an interesting video to tell us more about the opportunity and the growth that this day is about to create. So here we have the audiovisual. Gujarat, propelling the growth of a new India. Gujarat, a state with many firsts. Gujarat has been at the forefront of driving the growth of the country. A strong and stable economy
coupled with Government of Gujarat's proactive and investor-friendly policies, have resulted in Gujarat emerging as a global business hub. In line with the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of a self-reliant India and led by the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel, the state's conducive business environment has attracted investment from leading industrial giants, making it the manufacturing hub of the country. The state is an industrial paradise with its all-inclusive, sustainable development model, huge reservoirs of skill and knowledge, and vast business and investment potential. Gujarat is a leader in industrial sectors such as chemicals, petrochemicals, drugs and pharmaceuticals, dairy, cement and ceramics, gems and jewelry, textiles and engineering, ushering a new era in the ever-evolving market economies and driving the next phase of digital revolution. The government of Gujarat has identified a fresh growth avenue, semiconductors and displays. Semiconductors are playing a critical role in the world in more ways than we can imagine. It is our collective aim to establish India as one of the key partners in global semiconductor supply chains. Gujarat has taken a lead by being the first state in the country announcing a dedicated policy for providing assistance to semiconductor and display manufacturing facilities. The policy is structured to guide and facilitate investment in the industry, making Gujarat the next global hub of semiconductor and display manufacturing sector. It aims to make Gujarat a pioneer state in developing the Indian electronics system design and manufacturing ecosystem, strengthening the vision of Atmanirbhar Bharat through Atmanirbhar Gujarat. Under the aegis of the Department of Science and Technology, Gujarat State Electronics Mission, GSEM, has been set up with a vision to build a vibrant semiconductor, display and design and innovation ecosystem. GSEM will organize efforts for promoting the industry in a more structured, focused and comprehensive manner. Now, two international giants have joined hands and have come forward to partner with the government of Gujarat in the semiconductor and display manufacturing sector. The globally acclaimed Vedanta Group and Taiwanese conglomerate Foxconn Group. This collaboration will be one of the biggest investments in the history of independent India, with a total projected investment of 1.54 lakh crore rupees. The mega partnership will generate more than 1 lakh jobs of direct and indirect employment. Vedanta Group is a globally diversified Indian conglomerate with a strong presence in high-tech electronics value chain and in-house glass technology. Honhead Group, Foxconn, is a Taiwanese multinational electronics contract manufacturer. It leverages its expertise in software and hardware to integrate its unique manufacturing systems with emerging technologies. The group has expanded its capabilities in 3 key technologies: artificial intelligence, semiconductors, and new generation communications. Gujarat welcomes Vedanta Foxconn Group to sign a memorandum of understanding with the government of Gujarat. Suswagatam. Very informative and enlightening indeed. Well, Gujarat has been a state with many firsts. Today, as we learned, 2 international giants have joined hands and come forward to partner with the government of Gujarat in the semiconductor and display manufacturing sector. The globally acclaimed Vedanta Group and Taiwanese conglomerate Foxconn Group. Ladies and gentlemen, the time has now arrived, which we all are eagerly and enthusiastically waiting for. The state of Gujarat is going to set a new benchmark in the history of semiconductor world. The collaboration to create great synergies and the mega partnership to take us to the next level of revolution in the digital world. Time for the signing of MoU. I am absolutely overwhelmed
to invite our dignitaries, Shri Akarsh Hebert and Shri Vijay Nehraji, to come forward for the signing and exchange of Memorandum of Understanding. So to commemorate the day, let's give a bigger round of applause to all the leaderships who are going to pull this through, and a very big milestone for all of us. Congratulations to everyone who is present here. As we steer into a new era of transformation in the electronics sector with AI, semiconductors, and new age communications, and many more, may I take the privilege to invite the Honorable Union Minister for Electronics and IT, Shri Ashwini Vaishnav-ji, for the address on this noteworthy occasion. Please welcome him with a big round of applause. आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस ऐतिहासिक दिन के चीफ गेस्ट गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, उपस्थित मेरे बड़े भाई श्री जीतू भाई वाघानी जी, ब्रिटेन से आए वेदांत साहब, श्री अग्रवाल, उपस्थित फॉक्सकॉन के सभी वरिष्ठ लीडर्स, मिस्टर ब्रायन हो, all the senior officials from Foxconn, हम सबको हमेशा गाइड करने वाले चीफ सेक्रेटरी साहब, मेरे साथी विजय नेहरा जी, पंकज जोशी जी, आकाश भाई, उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया था आज से करीब 7 साल पहले, तब हम लोग सोचते थे कि ये कितनी बड़ी जर्नी होगी और ये देश को किस दिशा में लेके जाएगी। एक अलग ही एक थॉट प्रोसेस था। शुरुआत हुई स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, नई नई चीजें आई उसमें। स्टार्टअप्स क्या होते हैं हम लोग उस जमाने में इतना समझते भी नहीं थे। आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो गए, 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी नहीं होगी, लोग कहते थे कि भारत में कभी मोबाइल बन सकते हैं। आज उसी विजन का कमाल है कि आज भारत दुनिया में दूसरे नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन्हीं चीज से होती थी, बिल्कुल प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल सी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। आज $80 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, यानी 6 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। दुनिया भारत का लोहा मान है। दुनिया देख रही है कि किस तरह से भारत ने इतने कम समय में मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अकेले में आज करीब 25 लाख रोजगार
रोजगार ऑलरेडी सृजित हो चुके हैं। केवल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख रोजगार सृजित हो चुके हैं। अब मोदी जी ने हम सबको टारगेट दिया है कि ये 25 लाख को 1 करोड़ रोजगार मिलेंगे। 1 करोड़ रोजगार के लेके जाना है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के पूरे इकोसिस्टम को जिस ऊर्जा से, जिस गति से एकदम नेग्लिजिबल से 80 बिलियन तक लेके आए, उस 80 बिलियन को आप 80 से 300 बिलियन तक लेके आए। 300 बिलियन डॉलर का मतलब हुआ करीब करीब 25 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री देश में हो। 1 करोड़ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। आप सब जानते हैं हर एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के पीछे 3 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट काम होते हैं। इतना बड़ा विजन है, इतने बड़े विजन पे एक साल का। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उस इंडस्ट्री के जितने भी डायमेंशंस हैं, उन सब डायमेंशंस को कैसे एक करके एक दिशा में लेके जाना, एक इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में। जब भी कोई चीज हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके पीछे उसका रॉ मटेरियल है। अगर स्टील बनाना है तो उसमें आयरन ओर चाहिए, कोयला चाहिए। अगर एल्यूमिनियम बनाना है तो बॉक्साइट चाहिए, उसमें एनर्जी चाहिए, कोयला चाहिए। अगर कार बनानी है तो उसमें स्टील चाहिए, टायर चाहिए, कई तरह के रॉ मटेरियल, हर चीज का एक रॉ मटेरियल। आज की जो डिजिटल की दुनिया है, इस डिजिटल की दुनिया के 2 सबसे बड़े रॉ मटेरियल है। पहला है स्पेक्ट्रम और दूसरा है सेमीकंडक्टर। हर एक चीज अगर आप देखो, कोई भी डिजिटल की चीज, आप ये कैमरा देख रहे हो, ये माइक देख रहे हो, ये टीवी है सामने, जो भी चीज आप देखते हो आज की जिंदगी में, आपके हाथ में जो फोन है वो फोन, घर में जो टीवी है वो, जो जिस कार को चला के आप यहाँ पे आए, जो स्कूटर है, बाइक है, उसको देख लो। कोई भी चीज जो ट्रेन चलती है, वंदे भारत ट्रेन अभी आपने देखी, तो जो भी आज की दुनिया में, आज की युग का जो भी चीज बन रही है, उस सब में सेमीकंडक्टर लगता ही है क्या सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे फंडामेंटल रॉ मटेरियल। सेमीकंडक्टर छोटी छोटी चिप्स के फॉर्म में आता है, उसको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बनते हैं। उन सब सर्किट से चीजों को कंट्रोल करते हैं वो है जो ब्रेन होता है। आपके इस कैमरे का ब्रेन है, या जो ट्रेन है उसका ब्रेन है, या जो कार है, कार का जो ब्रेन है वो ब्रेन है। देश में सेमीकंडक्टर का इतना बड़ा इकोसिस्टम बनाने की प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पिछले साल 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी देश के लिए अप्रूव की। 1 जनवरी को उस पॉलिसी को अप्रूव किया। दुनिया के किसी भी देश में इतनी फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं होती जितनी मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत फैसले कर रहा है। करीब सेमीकंडक्टर में कोई भी फैसला लेने में नॉर्मली 2 साल 2.5 साल लगते हैं। बहुत तेज जाए तो 1.5 साल में कोई 18 महीने 16 महीने में फैसले होते। मोदी जी के नेतृत्व में फैसले एकदम तेजी से जितनी तेजी से सेमीकंडक्टर का फैसला हुआ है, आज दुनिया समझे इसको नोटिस कर रही है और दुनिया देख रही है कि भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर प्लेयर की तरह उभर रही है। बहुत सारी चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट है रोजगार। आज आपको स्पष्ट रूप से कहा गया है, और मैं दोहरा रहा हूं, इस एक अकेले इनिशिएटिव से जो आज मोदी साइन हुआ, इस एक अकेले इनिशिएटिव से 1 लाख डायरेक्ट रोजगार जनरेट होंगे। 1 लाख डायरेक्ट। और ये जो शुरुआत है, इसमें पौधा है, ये जड़ है, बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। 1 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री, 5 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री, 1 फैक्ट्री
उसका पूरा इकोसिस्टम है। सेमीकंडक्टर का बहुत कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है। कई तरह की गैसेस होती हैं, कई तरह के केमिकल्स होते हैं, कई तरह के डिजाइनर्स होते हैं, कई तरह के सिलिकॉन का काम होता है उसमें, कई तरह की चीजें जब जुड़ती हैं तब जाके एक चिप बनती है जो कि हर चीज का ब्रेक बनाती है। तो कॉम्प्लेक्स चीज होगी, मुश्किल चीज होगी ब्रेक को आसानी से तोड़ना पड़ती है। तो मोदी जी का प्रताप है और भूपेंद्र भाई साहब का एक ताकत के साथ काम करने का जज्बा है कि एक साल के कम समय में आपने आज एक साल में इतनी तेजी से हर एक प्रोग्राम में, हर काम में इतनी स्पष्टता के साथ, इतना डायरेक्ट एकदम नेतृत्व लेके हर एक काम में आपने ऐसा एनर्जी दिखाई है कि मानना पूरा देश मानता है। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। और देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरह से एक डायरेक्शन दे रहे हैं, जिस तरह से गति दे रहे हैं, जिस तरह से विजन दे रहे हैं, जिस तेजी से उस विजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यह सबका स्वभाव है। आज आप सबको बहुत अभिनंदन, आपको अभिनंदन कि आपने ये MoU साइन किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, बहुत तेजी से फैक्ट्री का काम चालू होना चाहिए। फैक्ट्री का काम हो, फैक्ट्री के साथ साथ पूरे इकोसिस्टम के डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे जैसे रॉ मटेरियल बने वैसे वैसे उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम भी है और डिजाइन का इकोसिस्टम भी है। आज भारत में करीब 50,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स और मोदी जी ने टारगेट दिया है 85,000 सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स और तैयार करें। करीब 35 यूनिवर्सिटीज के साथ, 35 यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप हो गया है, MoU हो गया है। कोर्स का जो करिकुलम होता है कि भाई बीटेक करते हुए बच्चे को सेमीकंडक्टर क्या होता है उसकी डिटेल पढ़ेंगे। एमटेक PhD कोर्स दुनिया की बेस्ट से बेस्ट संस्थाओं के साथ MoU वो सब कंप्लीट हो गए। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, गेम चेंजर है, डायरेक्शन बदलने वाली देश की। इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का, माननीय एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री जीतूभाई वाघानी जी का, मेरे साथी सेक्रेटरी साहब का, वेदांता के चेयरमैन साहब का, फॉक्सकॉन की एंटायर टीम का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और गुजरात के सभी नागरिकों को मेरा अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you, sir, for your encouraging words. So let's get ready as Gujarat takes lead once again. As we heard, semiconductor and chips are driving our spectrum of work in every walk of life. With these words, may I now request the inspiring and visionary leader, Honorable Chief Minister, Sir, Shri Bhupendra Bhai Patel, for his address on this special occasion. वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप के साथ MoU साइनिंग के इस अवसर पर मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, मेरे साथी मंत्री श्री जीतूभाई वाघानी, वेदांता के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी, फॉक्सकॉन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट श्री ब्रेन हो, वेदांता ग्रुप के MD श्री अक्रश सेबर, हमारे मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार, अधिक मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी जी, प्रेस मीडिया के मित्रों, सब आमंत्रित मेहमान, सबको मेरा नमस्कार।
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना है कि भारत सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इस सपने को पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी अथाक प्रयत्न कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने के नेतृत्व में और दिशा दर्शन में गुजरात विकास के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ चढ़कर दे रहा है और विकास का रोल मॉडल बना रहा है। प्रधानमंत्री की ही प्रेरणा से गुजरात पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के रूप में उभरा है। इस परंपरा को और गति देते हुए हमने हाल ही में देश के प्रथम डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गुजरात की हमारी प्रतिबद्धता इस पॉलिसी से भली-भांति साकार होगी। गुजरात की डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी का समर्थन करते हुए वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप गुजरात में निवेश करने आज गुजरात सरकार के साथ MoU किया है। मैं वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह दोनों ग्रुप राज्य में 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से राज्य में 1 लाख से भी अधिक युवाओं को रोजगारी का अवसर मिलेंगे। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि गुजरात सरकार ने एक डेडिकेटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मिशन की भी स्थापना की है और इतने कम समय में ही इस मिशन ने काम करना भी शुरू कर दिया है। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए आपको हर संभव सहायता प्रदान करेगा। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए आपको गुजरात सरकार के हर विभाग का पूरा सहयोग मिलेगा। फिर एक बार आप सबको अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और मेरी बात प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय। Thank you, sir, for your motivating words. Indeed, we see there is strong focus to institutionalize the vision of Atmanirbhar Gujarat to Atmanirbhar Bharat. Well, now to rejoice the memorable day, we would like to present mementos to our dignitaries on the dais. I request Shri Pankaj Kumar ji to present the memento to Shri Anil Agarwal ji. Thank you, sir. May we take the opportunity to request Shri Vijay Nehra ji to present the memento to Mr. Brian Ho. Thank you very much, sir. Mr. Vijay Khare will now present the memento and thank our dignitary, Mr. Akash Heber. Thank you very much. And as we reach towards the concluding part of this notable event, to deliver the vote of thanks, I once again call upon the Mission Director, Gujarat State Electronics Mission, Government of Gujarat, Shri Vijay Khare.
अच्छा उधर तक नहीं जाएगी वायर ये वाली। I'm good. Hi, nice meeting you. Wait, Ayodhya Sahib, you mentioned Rajasthan and Gujarat. Okay.